Now we have state-of-the-art highways, but still there is a deficiency in scientific designs on roads. Second thing, we have some vehicles which are architecturally defective. So when these architecturally defective vehicles are moving on a unscientific road full of defects, they go automatically out of control. In this country, we do not have rules in place to prevent such container trucks from plying on roads where regular passenger, it could have been you or me, taking that highway on that fateful day. बहुत ऐसी जगह है जो कई सालों से ब्लैक स्पॉट है। ये एनएचएआई को भी पता है, हमारे प्रशासन को भी अच्छी तरह से पता है। ये सालों पुराने ब्लैक स्पॉट आज भी वैसे ही हैं, उसी जगह पर बार बार दुर्घटनाएं होती हैं। When they manufacture such type of vehicle, they should also give the proper training to the drivers who are experienced to drive minimum 3 years a smaller vehicle, smaller trucks. See, the vehicles are safe when you hit another object or the vehicle is overturned. But in this case, a heavy object is very odd subject fell on the top of the vehicle, wherein there is no provision in the Motor Vehicle Act, or there is no provision in the vehicle to prevent that or to safeguard. On a Bangalore highway, it's a terrible tragedy. It's a tragedy which is really unspeakable. I'm at a loss of words to actually talk about it. How a family of 6 died within a matter of moments. Why are Indian highways becoming death traps? Do we as citizens need better road manners before we actually have better roads? A family of 6 perished on NH48 last weekend on a Saturday when this family was actually traveling for Christmas to their family home. We are talking about Chandram Yagapagal, 48 years of age, founder and CEO of a software company. He, along with 5 others, were traveling in his new Volvo XC90, supposed to be one of the safest models to drive. Now, this happens when an oncoming container truck laden with aluminum pillars fell on top of this SUV, catching them completely off guard, perhaps. So, in a matter of moments, the family is crushed to death. This happens at 11 a.m. on Saturday near Bengaluru in Nelamangala. Chandram and his family lived in Bangalore suburb, and they were en route to his native village Murbagi in Maharashtra's Sangli district. It's a blood-curdling story how life can end in a flash. And for no fault of this family who was joyfully traveling to their native village, all of them terminated in one moment when cruel fate turned against them. Their vehicle comes under the weight of this humongous container truck, and of course, none of them could survive the weight that fell on them. They had no means to save their lives in that moment. Is it just a freak accident? Do these container trucks pose a safety threat that we've been ignoring all this while? Was this a tragedy waiting to happen? Will lessons be learned? Who should take responsibility? How can we rein in on rash and negligent driving that often puts human lives at risk? Let me welcome, joining me here on the program, Praveenchandra Shetty, who's a road safety expert and a structural auditor. Thank you, Praveenji, for joining us. I also have Harbans Singh, again, a road safety activist. He runs a helpline and provides rescue teams for those who are caught in such kind of accidents. Namaskar, Harbans ji. Thank you for joining us. शुरू करते हैं प्रवीण चंद्र जी, ये जो this tragedy, this accident that happened on a Bangalore highway raises a lot of questions. If you look at the sequence of events and everything is caught on CCTV camera, what we are told is that this container driver had a vehicle driving in front of him, and that vehicle applied brakes. The container driver had to apply brakes, and then in order that it doesn't hit the vehicle, it tried to protect the vehicle in front of him. It swerved to the left, and then this particular SUV was hit, had to face the brunt of it because the entire thing toppled over. My question is that, do you feel that clearly rash and negligent driving on the part of both these drivers, the one who applied the brakes
suddenly, for some reason, must have been wanting to change the lane, and the driver of this container truck. Should there be more training for these sort of heavy vehicle drivers on how they have to conduct themselves, the distance that they have to maintain with other vehicles? What went wrong according to you, Mr. Shetty? Yeah. Afrida, let me correct you. I am not a road safety auditor. I'm a road safety research person. I did the Okay. research on the highways, driving 19,110 kilometers in Yeah. 58 days across the Indian peripheral highways and connecting city, town, and village roads and the All right. expressways. Apologies. Yes, please go ahead. Yeah, it's all right. So now we have state of the art highways, but still there is a deficiency in scientific designs on roads. Second thing, we have some vehicles which are architecturally defective. So when these architecturally defective vehicles are moving on a unscientific road full of defects, they go automatically out of control. So these vehicles which are architecturally defective, when they are moving on the unscientific highways, that is as good as a bullet coming out of a drunken person from Yeah. his revolver. That dangerous they are. Now, in this case, see, I have not visited the spot of accident. Unless we go there and see the entire site and inspect it, then only we can come to a conclusion what was the factor that caused the accident. But prima facie, after watching to several videos that are very rampant, very viral on the social media, it appears that the container truck is a oversized container that causes imbalance when there is a sudden need of application of brake. So this also apparently looks like the container was very, with a very large size with the smaller tire, the standard tires on the wheel. So there is a formula Yeah. how much should be the center of gravity of the vehicle from the ground. So in this case, what happened is the container looks a very huge one, and that has raised the center of gravity of the truck to certain higher level than the normal. Yeah. As again, it is laden with some aluminum bars, which are also Yeah. a small quantity of aluminum is weighing. It becomes very heavy weight. So we need to calculate. We need to get the data. What was the size of the container? What was the load of the Yeah. weight of the container, and the weight of the consignment it carried? Then what was the vehicle? Whether it was designed to carry that particular amount of weight or not. So So this these is three factors. extremely risky. So are you telling me that in Yeah, this country we do yeah. not have rules in place to prevent such container trucks from plying on roads where regular passenger, it could have been you or me, taking that highway on that fateful day? Any I one of fully us agree. any I one fully of agree with us you. could have faced this situation, which means, are there no rules for these container trucks? What time they can ply? What is the weight they can carry? How should the weight be placed on a truck that it does not lose balance on a route that is used by common people? Are there no rules, sir, on that? Yes, yes, there are rules, but violation of the rules is very common in India. Hmm. Now, in this case, the driver was alert till he saw the oncoming vehicle trying to hit him. So he tried to swerve the vehicle to avert an accident, Yeah. whereas because of the height of the container, the vehicle lost control. So So they that become hit. knowledge this particular driver must have is what I'm asking you. The Yeah, knowledge about, he's not an ordinary yeah, driver. yeah. He There is is a lack of driving a training for the truck container driver. vehicle with heavy weight, which can cause huge damage to anyone. And his primary concern should be how that weight that he's carrying, or the vehicle that he's driving, maintains its balance at all costs. He seems to not have that expertise. Otherwise, how could he not understand that if he brakes, there is every chance of this entire vehicle toppling over? That's a crucial piece of information that this particular driver did not seem to have, Mr. Shetty. Well, I do not have the first-hand information about the driver's qualification. Hmm. Hmm. So, according to me, in this case, the oversized container
carried on a truck that was meant to carry such a large load is driven by a person who may be a good driver Yeah. or may not be a good driver. On Yeah. sudden application of brake in an emergency, the vehicle loses control. Right. When the road I'll is, ask sorry, Mr. हरबंस सिंह जी, ऐसा जी क्यों है कि अपने जो आप जिस तरह का काम करते हैं, आप काफी वाकिफ होंगे कि किस तरह से इस तरह की घटनाएं होते रहते हैं अपने हाईवेज में. आप किसको जी जिम्मेदार ठहराते? क्या ये ज्यादातर वजह क्या होती है? ड्राइवर्स जो है वो अनट्रेन्ड होते हैं, वो रैश ड्राइविंग करते हैं, या अपने रोड सेफ्टी के जो नियम होने चाहिए, जो हाईवेज में जो स्पीड लिमिट्स होने चाहिए, जो जो रूल्स होने चाहिए, किस तरह के व्हीकल्स अलाउड है या नहीं अलाउड है, रूल्स में कमी है, लॉज में कमी है, कि ये ड्राइवर का ही नेग्लिजेंस है पूरी तरह से? जी अभी मेरे मित्र जो प्रवीण चंद्र जी हैं, इनका काफी गहरा अभ्यास है इस बारे में, और इन्होंने अभी जो कहा है वो बहुत ही सटीक और सही जानकारी है. जो मेरी जानकारी है उस मुताबिक, जैसा आपने कहा कि ड्राइवरों की ट्रेनिंग का कोई इंतजाम हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में नहीं है. हेलो जी जी बोलिए. मैं वो हेलो तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, वो एक्सीडेंट साइट में जो तो हुआ था और कैसे धन्यवाद. रेस्क्यू किया गया. आप बोलते जाइए. हाँ. मतलब ट्रेलर के लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग का ड्राइवर नहीं है. कैटेगरी है, लेकिन जब ड्राइवर की शॉर्टेज है तो ट्रांसपोर्टर ओनर या फ्लीट ओनर, जो भी ड्राइवर हेवी ड्यूटी हेवी क्लास का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस वाला मिल गया तो उसको सीधा स्टीयरिंग थमा देते हैं और वो निकल पड़ता है. उसको ट्रेलर चलाने का एक्सपीरियंस है नहीं है, फिर ट्रेलर में किस टाइप का वेट लोड है या कितना टन है, ओवरलोड है नहीं है, इस सब की जानकारी वो ड्राइवर को कुछ नहीं है, और उससे उसको कोई लेना देना भी नहीं है. एक अभी जो हाईवे पे स्पीड लिमिट की भी समस्या है. कहीं पे कुछ स्पीड लिमिट है, कहीं पे कुछ है. मिक्स ट्रैफिक होने की वजह से जो गाड़ियां लेट हो जाती हैं, फिर वो ड्राइवर थोड़ा तेज चलाते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, और समय पे अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए काफी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, और इस वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं. मेन वजह और भी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है NH48 मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे, दहिसर टू बॉर्डर गुजरात. बहुत ऐसी जगह है जो कई सालों से ब्लैक स्पॉट है. ये NHAI को भी पता है, हमारे प्रशासन को भी अच्छी तरह से पता है. ये सालों पुराने ब्लैक स्पॉट आज भी वैसे ही हैं. उसी जगह पर बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, तो पूरी जिम्मेदारी हम ड्राइवर पे भी नहीं डाल सकते. तो क्या यहाँ ये पे वही बहुत उसी ब्लैक स्पॉट, उन्हीं में से एक ब्लैक स्पॉट में ये घटना भी हुआ है आपके हिसाब से? जी जी जी. और बार दुर्घटना होने के बाद कोई एक्सपर्ट जाके वहां पे क्या प्रॉब्लम है, या डिजाइन का प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग डिफेक्ट है, या ड्राइवर को विजुअलिटी नहीं है, वहां पे दिखाई नहीं देता है, या और कोई प्रॉब्लम है, इस बारे में हमारे यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता है. एक्सीडेंट हो गया, 4-5 लोग मर गए, 1 लोग मर गए, उनको हॉस्पिटलाइज किया, फिर वापस से 2-4 दिन में 8 दिन में हम भूल जाते हैं, और फिर वापस से जब दूसरी दुर्घटना होती है तो फिर से हम अलर्ट मोड पे आते हैं. मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, मेरे एकदम पास में ही पिछले 2 साल पहले जो साइरस मिस्त्री जी की दुर्घटना हुई थी, जी वहां पे सडनली 2 लेन हो रहा है 3 लेन की बजाय. तो वो टेम्पररी वहां पे कुछ साइन बोर्ड्स लगे, बैरियर लगे, मार्क्स हुए रोड पे, रैम्बलर भी बनाए गए, लेकिन फिर से वो वापस उसी हाल में हाईवे है जो दुर्घटना के पहले. मतलब टेम्पररी सॉल्यूशन होते हैं, परमानेंट कोई इलाज नहीं होता है. वहां पे 3 लेन बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल एक ब्रिज और बना हुआ है, सिर्फ वहां पे प्रॉपरली मैनेजमेंट हो जाएगा तो वहां पे वापस दुर्घटनाएं की रोकथाम के लिए कोई उपाय ठोस तरीके से नहीं होती. जी जी. हाँ. I think the other guest, Mr. Praveenchandra, wants to come in. Go ahead, sir. Yeah. Afrida, see, I have seen the videos you have uploaded now. In this, I can see 2 things. One is out of 6, 12 plus 14 tires, 4 tires are completely bald. Okay, it is totally worn out. We can see now. Can you see this tire?
There Yeah, is no please tread say on that the back. again. Yeah, there are 6. Yes. Yeah, see, there are in these 4 tires, they are totally bald. Okay, there is no grip. These tires do not give any grip to the moving vehicle on the road. Whereas other 4 trucks and other 8 tires at the back have the full thread on 4 tires and half thread on the second thread. Let me This, just play that visual again, and please yeah, talk us through it once again. What you're trying yeah, to say about the wheels. If I yeah, understand you correctly, that with this yeah, sort of a load, the wheels yeah, also have to have a particular grip, which, yeah, according to you, in this yeah, truck is yeah. not the case, and Yeah, therefore see this is what these you were 4 tires, what referring you to. can see is these tires, what you see here now. Yeah, See these 2 tires, okay, yeah, and the 4 tires yeah, plus these 4 tires and right. last 4 set. Out of 12 tires in this, there are 8 tires are totally bald or unevenly worn out, and there is no Worn thread on out. the Okay, okay, worn out unevenly, and there is okay. no thread. They are not matching each other. The tire All grip has right. to be on the same width, Yeah, so I can height. see that now. And Yeah. yeah, so all these tires, these are Mhm. we call it a scrap tire. These ball Mhm. tires and the scrap tire are coupled with other tires which are partially worn out and Yeah. not worn out tires. These causes lot of imbalance on the vehicle, because of which the vehicle loses the traction on the road. The primary cause of this accident is the tire. The poor condition of the tire is the primary cause of this accident. Okay. The secondary Right. cause is in and around when you have shown the video, I could Hmm. see some potholes on which the vehicle are run. Just see the focus on the road where Yeah. some potholes are seen. Can you do that? Yeah. I'm trying to play that out as well. Yeah, Yeah. yeah. I'll stop when So that portion yeah, comes. it Okay. should be behind the truck. Truck has Hmm. already passed that Okay. I'm trying to go section of the back road. to Yeah, that part. behind that. Yeah. From backside. Go backside, backwards on from this. Yeah. Yeah. Is this portion We you're have to saying? see. Yeah. So what is this? I can't make out. Is it a pothole? Is it a pothole Hmm. or It's an uneven surface uneven of the road, road? basically. Huh? The road is uneven. It's not a very Uneven. even Then sort of a road. that has imparted its own adverse effect when both Hmm. these factors come together in such a scenario that causes major road traffic accident and deaths. So here Hmm. I blame the tires because it is visible here. Yeah. Then the road condition, we have to see the site. But Hmm. Hmm. apparently the surface also looks like uneven. Yeah, yeah. And this, So yeah, two very yeah, important things have come out so far. हरबंस जी ने भी कहा इस चीज हाँ, को कि जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो हाँ, आइडेंटिफाइड है, उसको ऑलरेडी हाईलाइट किया गया है कि ऐसे ऐसे स्पॉट्स में हाँ, एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं. उसका yeah, कोई ठोस कदम उस पर नहीं उठाया जाता. नो परमानेंट सोल्यूशन. खाली उसमें एक दो आप जैसे जिसे कहते हैं एक ये कुछ नोटिफिकेशन लगा दिया, उधर कुछ बैनर लगा दिया, एंड दैट इज इट. बट हाउ डू यू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन दैट ब्लैक स्पॉट? उसके लिए जो एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिफेक्ट है तो उसको करेक्ट करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. और आपने yeah, एक बहुत correct. सही चीज कही कि ये जो अनइवन रोड्स है, इस तरह के रोड्स में अगर हैवी लोडेड व्हीकल्स चलेंगे तो Yeah, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. और उसके ऊपर जो मेंटेनेंस ऑफ दीज ट्रक्स, जो टायर्स हम दिखा रहे हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं है. दे वर नॉट सपोज टू बी ऑफ दिस वेराइटी ऑफ टायर्स. जो आप कह रहे हैं ये रिस्की है, डेंजरस है, और इसको नजरअंदाज करना, इसको इग्नोर करना, obviously you're putting lives at risk. And then comes the issue of the drivers. The I fully drivers, agree. आप जो कह रहे हो कि ऐसे रिक्रूट होते हैं और उनको भी जल्दी रहता है, they have a deadline to meet, they tend to speed up. So quite a few factors, हरबंस जी, आप देख सकते हैं कि इस तरह की घटनाओं में जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पर्टिकुलरली ये बेंगलुरु वाले इंसिडेंट के बारे में अगर आपने देखा है, जो फुटेज मैं भी दिखा रही हूँ, इस पे आपका क्या मानना है कि कहाँ सबसे ज्यादा गलती हुई है? अभी साइट इंस्पेक्शन से पहले हम्म. जो भी स्टेटमेंट देना बहुत कठिन है. मुश्किल Okay. है. अभी आपने you raised the 2 points. One is the highway audit and inspections.
अभी हकीकत में बोलूं, we in NHAR or in MORH, we do not have any experts to carry out this road safety assessment. Even today, the highway audit is getting done by the improperly qualified persons. Those do not have any knowledge about the road. Second thing is, हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऑलवेज से दैट हम आईआईटी से करेंगे, आईआईटी से करेंगे, आईआईटी से करेंगे, लेकिन आईआईटी में कौन सा प्रोफेसर है जिसको रोड सेफ्टी के बारे में मालूम है? एब्सोल्युटली नो. इन आईकार 2020 में भी जब ये मुद्दा आया, so I told them very clearly. They gave some presentation from IIT Powai. One lady professor gave a presentation to the Ministry of Roads and Highways, in which she has copied the data of 1987 from Hayden, a country called Hayden, and how it is applicable to India in 2020. ऐसा रिसर्च करके कोई फायदा नहीं है. और एक रिटायर्ड पर्सनल्स, the highway, MORH and NHA normally takes the people who are retired from them as if it is their son-in-law's house, father-in-law's house, for them giving 5 years of comfort. By sitting at the office, they just scribble something and get it sanctioned. So that has to be completely stopped. It is actually infuriating. मैं ये सवाल हरबंस जी से पूछ रही थी कि ये पर्टिकुलर जो एक्सीडेंट है, आपके एक्सपीरियंस में क्या आपको लगता है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स जब होते हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीर कितना दिल दहलाने वाला तस्वीर है. इस तरह से एक पूरी फैमिली को क्रश कर दिया गया है. उनका कितना बड़ा शॉक हुआ होगा, कितना हेल्पलेस हुए होंगे. और मैंने ये भी सुना है हरबंस जी की जो चला रहे थे, जो सीईओ है एक सॉफ्टवेयर कंपनी के, उन्होंने ब्रेक्स अप्लाई किया, क्योंकि कई बार क्या होता है उस नर्वसनेस में, जब आप देख रहे हो एक कंटेनर ट्रक आपकी तरफ आ रहा है, तो बजाय ये कि वो स्पीड अप करे, उन्होंने रोक लिया अपना व्हीकल. सो आपके अनुभव में क्या वजह है, मतलब किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? देखिए मैडम, अभी ये जो दिख रहा है वीडियो के हिसाब से, ये ट्रेलर या तो टर्न ले रहा था, क्योंकि टर्निंग के टाइम ही टर्टर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. टर्न नहीं ले रहे थे, और उन्होंने क्या किया, वो दूसरे लेन में ही चले गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में उनका ट्रक मूव कर गया, क्योंकि उन्होंने और वहाँ रोड भी अनइवन है. रोड की हाइट में साइड पट्टी जिसको बोला जाता है, टक्कर ना लगे आगे के व्हीकल को, इसलिए उन्होंने ऐसे मूव किया, और उस वजह से ये ओवर टॉपल हो गया पूरा जो हेवी वेट था. जी मैडम, वो रोड भी अनइवन है. एक तरफ रोड का जो डीप है वो काफी ज्यादा है, और कंक्रीट वाला रोड की हाइट ज्यादा है, उस वजह से भी ये पलट जाने की संभावना है. और टायर कंडीशन भी उतना इम्पोर्टेंट है. दिस टाइप ऑफ टायर्स ऑन द व्हीकल, इट विल नॉट गिव एनी grip to the vehicle to move. Grip नहीं था. Gravity, center gravity क्या है? And when the brake is applied, because of the difference in the grip of these rubber threads, when vehicle will not stop in a particular line, it will wave. Right. It will wave. In this case, primarily the tire condition is the major cause of accident. Tire condition. Road के बारे में तो only after I inspect the road, if given a chance, I can comment. But as per this video, it is the primary cause of this accident is the poor condition of the tire, as we can see here. आप क्या बोलते हैं हरबंस जी? हरबंस जी, आपको क्या लगता है कि जो ट्रक्स के जो मेंटेनेंस है, उसमें वो भी जिम्मेदार है? वो कोई उसमें देख रेख नहीं होता है इस तरह के ट्रक्स का? बिल्कुल. यहाँ से गाड़ी भरती है, साफ दिखाई दे रहा है. जी, गाड़ी भरती है, फिर खाली होती है, फिर भरती है. उसको कोई प्रॉपरली कोई लॉकशीट या कोई मेंटेनेंस का प्रॉपर इंतजाम नहीं होता है. इनको ट्रिप मारने हैं. ट्रेलर मेरा 1 महीने में कितना ज्यादा ट्रिप मारेगा? टायर 1 ट्रिप और चल जाएगा, 2 ट्रिप और चल जाएगा, फिर बदल देंगे. ऐसे लेट गो करते करते ये कंडीशन हो जाती है, और फिर वो गाड़ी मतलब हम उसको कह सकते हैं कि अनफिट गाड़ियां बहुत सी हैं रोड पे, जो चलानी खतरनाक है. तो ये सारे ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी जिम्मेदार है, जो ये कंटेनर ट्रक्स चलाते हैं, उनको भी जिम्मेदारी लेना चाहिए. सिर्फ जो है ट्रक ड्राइवर को बुक करने से क्या काफी है? बिकॉज व्हाट आई फील, एंड लेट मी टेल आवर व्यूअर्स आल्सो हियर,
दैट एट द मोमेंट क्या हुआ है कि ट्रकर मैडम को बुक कर लिया है बेंगलुरु पुलिस ने, और बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट जी पुलिस का कहना है कि दूसरा जो ड्राइवर था, जो एक ब्लू रंग की गाड़ी थी वो कंटेनर ट्रक के सामने से चल रही थी, उन्होंने ब्रेक लगाया तो इनको ब्रेक लगाना पड़ा। उस गाड़ी के ड्राइवर की बिल्कुल भी तलाश जारी है। और ये जो कंटेनर ट्रक का जी ड्राइवर है उसका नाम है आरिफ, वो झारखंड से है, वो भी हॉस्पिटल में उनको भी इंजरीज हुई है। और उन्होंने ये कहा कि एज आई वाज ड्राइविंग देयर वाज अ ब्लू कार अहेड ऑफ मी, the driver applied the brakes, I was unable to control my vehicle, so to avoid hitting the car in front of me I turned the steering wheel to the right towards the divider, and that is when he saw the other car coming in that direction. फिर उन्होंने वापस he tried to steer left, and that is when the load of the truck fell on the SUV. So Arif has been booked. उनको rash driving का, negligent driving का, endangering human life, डेथ बाय नेग्लिजेंस के कई सारे सेक्शंस उन पे लगा दिया गया है। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है उसके खिलाफ जो पेनल्टी है हरबंस जी, क्या आपको जी लगता है पेनलाइज करने से, ड्राइवर्स को पेनलाइज करने से उनका रैश ड्राइविंग का रवैया जो है, माइंडसेट जो है, वो ठीक होने की चांसेस है, या कुछ नहीं और ही उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा? क्या कानून से होगा कि ट्रेनिंग से होगा? जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो जिम्मेदारी ले? बिल्कुल मैडम, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। फिर हमारी सड़क पे, हाईवे पे जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस चौकियां हैं, हर एक टोल पे पुलिस नाका है। वहां पे ऐसी जो अभी प्रवीण चंद्र जी ने बताया टायर की एक खस्ता हालत है, तो ये सब गाड़ियों की हालत या विजुअली जो दिखता है, किसी का स्टेपनी नहीं है, कोई एक्सल ऊपर करके गाड़ी चलाता है, तो ये सब बातों को वो गौर नहीं रखते हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। मतलब कोई गाड़ी की फिटनेस की इंस्पेक्शन का इंतजाम हमारे यहाँ ऑन रोड नहीं है। ट्रांसपोर्टर खुद ही अपनी गाड़ी का फिटनेस चेक करता है या ठीक करवा लेता है और वो गाड़ी लोड हो जाती है। पर्टिकुलरली जो डेंजर जबकि जैसे अगर देखा केमिकल जाए तो क्योंकि आप पब्लिक रोड यूज कर रहे हो और किसी का भी जान जी खतरे में आ सकता है, तो ये सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि कोई एक नियम बिल्कुल बने बिल्कुल जिसमें फिटनेस सर्टिफिकेट मिले इस तरह के व्हीकल्स, इस तरह के हर ट्रक्स। हर हाँ 3 महीना या एक पर्टिकुलर किलोमीटर के बाद उसका फिटनेस चेक होना चाहिए। ट्रेलर में जहां तक मेरी नॉलेज में है, बहुत से ड्राइवर उसका ट्रेलर का ब्रेक भी प्रॉपर काम नहीं करता है, उसी हालत में ट्रेलर चलाते हैं। मतलब आगे जो हॉर्स है उसका ब्रेक तो हॉर्स के ड्राइवर के कंट्रोल में रहता है, लेकिन जब ट्रेलर अटैच करते हैं तभी उसको एयर पाइप ज्वाइंट करने होते हैं। अगर कोई भी पाइप लीक है, प्रॉपर एयर प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा है, तो ट्रेलर का ब्रेक कम लगेगा या लगेगा ही नहीं। ऐसी हालत में भी दुर्घटनाएं होती हैं। और बहुत ही दुर्घटना होने जरूरी के चीज बाद आपने हाईलाइट किया है। जी बताइए, कंप्लीट योर पॉइंट। दुर्घटनाएं होने के बाद आरटीओ भी इंस्पेक्शन होता है या बड़ी कंपनियां भी आके अपनी तरफ से इंस्पेक्शन करती हैं कि ब्रेक नहीं लगा या ब्रेक कमजोर था या गाड़ी ओवरलोड थी, क्या था। ये सब पहले भी होना जरूरी है। जैसे गाड़ी भर के निकली, हर चेक पोस्ट पे या हर टोल नाके से गाड़ी जाती है, तो वहाँ इन गाड़ियों का चेकिंग, जो ज्यादा खराब कंडीशन दिखती है उसको साइड में लगा के आप चेक कर सकते हो या चेक करना जरूरी है। यहाँ तक मेरी नजर में है, मैंने देखा है एलपीजी सिलेंडर जो डिस्पैच करते हैं गांव गांव में जाके या घर घर में, वो सिलेंडर पूरे बम के तरह उस गाड़ियों में भरे होते हैं, 40-40, 50-50 के संख्या में। उन गाड़ियों की हालत देखते ही पता चलती है, ना ब्रेक लाइट है, ना उसमें सिग्नल चल रहा है, ना उसका टायर प्रॉपर है। तो ये गाड़ियां क्यों रोड पे चलती है? इसको रोक टोक या रोकने वाला है, इनके ऊपर कंट्रोल करने वाली कोई हमारे पास ऐसी यंत्रणा बड़ा नहीं है। रिस्क है ये बहुत बड़ा जी रिस्क है, और इस पर बोलने वाले लोग बहुत कम है। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस चीज को हाईलाइट किया, क्योंकि ऐसे जी स्टोरीज और इस तरह की जो खबरें हैं उस पे बहुत इन डेप्थ एनालिसिस और डिस्कशन होता ही नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि ऐसे एक ट्रेजेडी हो जाए तब सब जाग जाते हैं, सारी जो खामियां हैं वो सामने आ जाती है, फिर वी गो बैक टू बिजनेस। आप देखिए जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, इसके अंदर 6 लोग थे,
चंद्रम यागपागल के अलावा उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे 16 साल और 12 साल, फिर उनकी एक सिस्टर इन लॉ 36-year-old एंड हर डॉटर. ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में ये 6 लोग थे. मतलब how distressing is this visual that we are looking at right now? Praveenji, you wanted to talk about the training of drivers and where we are lacking. Please go ahead. Now see, driving a 6-wheeler or 8-wheeler truck and driving a horse with trailer combination is entirely different. Okay. Yeah. The truck has got either 6 or 8 or 12 tires on a single chassis, whereas this is a combination of tractor containing 6 truck tires and another attachment to a round table, turntable. It's called turntable at the back. Yeah. So there is a lot of imbalance between the tractor and the trailer. So when they impart the training to the drivers, there is no provision or there is no facility in India to train the drivers on actual tractor and trailer like this. Yeah. They give the training only on 6-wheel trucks. That is also inside the test ground and in the stimulation process, which is not at all sufficient to drive the tractor trailer combination. See, these vehicles which they manufacture like Ashok Leyland, Mahindra and Mahindra, Tata Motors, Bharat Benz, when they manufacture such type of vehicle, they should also give the proper training to the drivers who are experienced to drive minimum 3 years a smaller vehicle, smaller trucks. Yeah. I also want to point out this Volvo model. This has been marketed as the safest model on Indian roads. Yeah. Apparently, it's accident-free. But even those sort of accident-free models will not work if something like this happens and you get crushed under a heavy container truck. Now, so what is the vehicles are safe. Someone investing that sort of money in a vehicle which they feel is the safest. I was reading about Chandram, how carefully he chose this vehicle because it was the safest. And look at the irony of the situation. Yeah. Regarding the safer vehicle, like with the NCP numbers, Bharat NCP numbers, see, the vehicles are safe when you hit another object or the vehicle is overturned. But in this case, a heavy object is very odd subject fell on the top of the vehicle, wherein there is no provision in the Motor Vehicle Act or there is no provision in the vehicle to prevent that or to safeguard. Here it is crushed to zero level, ground level. So no safety measures are possible in such accidents. Any car safety measure will not work because here is a case of another vehicle having overload of material and that has overturned on the road. So the best of safety features cannot help you. That's the tragedy of the situation. Praveenchandra Shetty, thank you for joining us. Really appreciate and really helpful information that you shared with my viewers today. I'm grateful to you for having joined us today on the program. Thanks very much. Yes, these are the pictures, viewers, and you can see how terrible this must have been for the passengers who were inside this vehicle. In a moment, their lives ended within moments as a container truck overturned on this SUV vehicle. This has happened in a Bengaluru highway. And this particular visual, I think, is something that one perhaps may not be even able to erase from memory once you've seen it, because thinking about the people who are trapped there itself has my hair stand on end, and I cannot imagine the trauma that they would have gone through. We'll leave it at that for now.